Good morning, students. Today we are going to start chapter 2 fraction and decimal 7th standard chapters. Okay. So first we learn what is the meaning of fractions and decimal. Okay. So first we learn what is the meaning of fraction. Fraction means when we divide a whole into equal part is called a fraction. When we divide a whole into equal part is called a fraction. Suppose example हमारे पास वन होल वन चपाती है. ओके. एंड व्हेन इफ़ हम इस चपाती को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स ना, सो दिस फ्रैक्शन इज दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ओके, बिकॉज चपाती इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट. चपाती इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट ना. ओके. फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स. The numbers on the top of is called numerator and the numbers below the line is called the denominator. For example, suppose 3/5. Okay, so fraction has 2 points now. Top of the number is called numerator and below of the line of the number is called a denominator. Okay, understands कि what is the meaning of fraction. Fraction means we divide a whole into two equal parts. Okay, suppose कि वन चपाती गिवन थी, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. एंड फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स. द नंबर ऑफ द ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, लाइन का जो टॉप है इज कॉल्ड अ न्यूमरेटर एंड बिलो ऑफ द लाइन इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर. ओके, सो नाउ वी लर्न what is the proper fraction, improper fraction. Okay, so what is the proper fraction? What is the proper fraction? In proper fraction, numerator is smaller than denominator. In proper fraction, numerator is smaller than denominator. For example, 3/5, 4/7. यहाँ देखिए न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर से, है ना. सो दिस फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिट ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर is smaller than numerator. Okay, for example 7/3, 5/4. Okay, यहाँ numerator is bigger than denominator ना, so it is called a improper fraction. Okay, so now we learn what is the like fraction, unlike fraction. So like fraction means like fraction means fraction with the same denominator are called like fraction with the same denominator. For example, suppose given 1/4, 3/4, 5/4. so देखिए डिनोमिनेटर है सेम ना, so this fraction is a like fraction. And unlike fraction is the opposite of like fraction. Unlike fraction, denominator have different. For example, 3/2, 5/6, 2/3. Denominator have different. So this fraction is called a unlike fraction. Okay. So our next topic, decimal number. Next topic, decimal number. So what is the decimal number means if a fraction written in a special form is a special form. suppose we writing half, for example 0.5. suppose हम half को कैसे 0.5 में लिखें तो this form is called a decimal fraction. Okay, where 0 is in the ones place and 5 is the tens place. For example, देखिए नंबर लाइन बिफोर जीरो टर्म स्टार्ट वंस, tens,
100, 1000, 10,000. After decimal term start tenth, tenths, hundreds, thousands. Okay, suppose